Hello friends, welcome to Urdu Kalakar. My name is Shoaib Ahmed and today we are going to learn the usage of want to. Today we will learn about want to, that how can we use want to do and why we use want to. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्तेमाल करने जा रहे हैं want to का कि want to हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं और यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट वांट इज यूज्ड फॉर डिजायर। जब भी हमारी कोई ख्वाहिश होगी हम किसी भी अपनी ख्वाहिश के लिए वांट टू यूज कर सकते हैं। लाइक दैट लेट मी टेल यू द एग्जांपल्स। I want to be successful in my life. I want to be successful in my life. So मतलब कोई भी ख्वाहिश हो हमारी जो हम पूरी करना चाहते हैं तो हम want to लगाएंगे वहाँ पर। So it is used for desire of someone for something. किसी भी शख्स की किसी भी चीज के तरफ कोई भी डिजायर मिक्स ख्वाहिश हो तो हम वो कहेंगे कि हम want to वहाँ यूज कर सकते हैं। So let's come towards the formation that how can we use in the sentence. First of all, we have to put subject. After that, want to or wants to. ये यहाँ पे मैंने want to या wants to लगाया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Let me clear it. Want to है हमारा जब भी हम जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं I, we, you, they plural names. I, we, you, they plural names. Those 5 subjects we will use them want to and other we use wants to. He, she, it are singular name. जब भी ये he, she, it singular name आएंगे तो हम उनके साथ wants to लगाएंगे और जब भी I, we, you, they आएंगे हम उनके साथ want to लगाएंगे। उसके बाद verb लगाएंगे first form. We will use first form of the verb when we are trying to make sentence with using want to. जब भी हम want to के साथ कोई भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उस सेंटेंस की फॉर्मेशन में जो वर्ब रखेंगे हमारा फेल होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट और हम ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सो हियर्स एग्जांपल, आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क। I want to go to New York. मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। As I told you that it shows the desire. So here has the desire of going New York. इस जुमले में न्यूयॉर्क जाने की डिजायर है जो सब्जेक्ट की हमने वो एक्सप्लेन की है कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश है। Here's other example. She wants to study in the university. As I told you, we will use wants to with he, she or he, she, it singular name. जब भी सब्जेक्ट की जगह he, she, it और singular name आएंगे हम उनके साथ wants to यूज करेंगे। She wants to study in the university. वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, ये उसकी डिजायर है, ख्वाहिश है। Here's third and last example of want to. They want to see you. They want to see you. वो आपको देखना चाहते हैं, ये उनकी डिजायर है, ख्वाहिश है। So it's all about the desire. Thank you viewers. मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करते रहिए कलाकार टीवी।